Hello children, this video is in context with my book which is launching soon, Ray Diagrams of Light for 10 ICSE Physics. इस बुक में मैंने आपके सिलेबस में चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो भी लाइट का पोर्शन है उसमें जितने भी रे डायग्राम्स है उन सभी को एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बच्चों का मार्क्स रे डायग्राम्स की वजह से नहीं कटे क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है. ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, इफ यू ड्रॉ योर डायग्राम्स परफेक्टली इट विल फेच यू फुल मार्क्स. सो लेट्स डू वन रे डायग्राम for chapter 4, refraction of light at plane surfaces. When light goes from rarer to denser medium, draw a line. Suppose this is air, rarer medium, and this is water, denser medium. Rarer medium में पार्टिकल्स कम होते हैं इसलिए लाइट की स्पीड बढ़ जाती है. When light is falling obliquely, this is your incident ray on the surface separating the two media, then what happens? Let's see. This is an incident ray, say AO. This is an incident ray. O is your point of incidence. Always draw normal to the surface at the point of incidence. इस पॉइंट पे हम रूलर को ऐसे रखेंगे ताकि इसका जो मार्किंग है वो हमारे लाइन से कोइंसाइड कर जाए, तब रूलर को परपेंडिकुलर कहा जाता है और तब हम डैश्ड यानी कि डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा नॉर्मल है. ठीक है. अब जो इंसिडेंट रे था उसको भी हम थोड़ा डॉटेड प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इन दो डॉटेड लाइंस के बीच से एक रे निकालनी है जैसे कि ये. सो दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे एंड चिल्ड्रन डू नॉट फॉरगेट टू पुट arrows. No arrow, no marks. For ray diagrams, trust me, no arrow, no marks. So here I will write B. This is my angle of incidence. This is my angle of refraction which the refracted ray makes with the normal. N dash is my normal. So AO is my incident ray. N dash is my normal. OB is my refracted ray. Always label beside the diagram so that it is clear what is what. Okay. And when light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. See, this is very, very important. It bends towards the normal. Towards the normal. इससे क्या होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाती है. ठीक है. ओके, सॉरी. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? द एंगल विच द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड makes with the refracted ray, this angle is called angle of deviation. So what is our angle of deviation? If you see by concept of geometry, you know that these two lines, let us take it as AX. So AX and N dash are making two vertically opposite angles. So angle I is equal to R plus delta. So delta is equal to I minus R. So that is angle of deviation. So what is angle of deviation? Everything I have mentioned very clearly in my book. These little informations are very important. You should write beside your ray diagram to fetch more marks. And don't
give any scope to your teacher to cut your marks. Now, case 2. What happens when light goes from denser to rarer medium? So here, for example, I will take glass, which is a denser medium, compared to air, which is a rarer medium. Okay, now let's see the behavior of light when it falls obliquely on the surface separating glass and air. Again, this is our incident ray, AO. O is the point of incidence. यहाँ हमें normal draw करना है, बिल्कुल same technique से करेंगे. O पे हम क्या किए हैं, रूलर को एकदम वर्टिकल रख के, ताकि उसका जो मार्किंग है वो हमारे सरफेस ऑफ सेपरेशन से कोइंसाइड करे, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर. ऐसे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. जो हमारा इंसिडेंट रे था उससे हम प्रोड्यूस कर देंगे, और इस बार रिफ्रैक्टेड रे इन दो डॉटेड लाइंस के बाहर जाएगी, बाहर. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट एरोज. सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर angle of refraction, and delta, that is angle of deviation, will again be this much, which incident ray जहां आ रही थी और refracted ray जहां चली गई, उन दो लाइंस के बीच की एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. कितना डिविएट हुआ, कितना डिविएट हो गया हमारा रे जो आ रहा था, that is angle of deviation. So in this case, angle of deviation will be r minus I, because you can clearly understand from the figure कि जो angle r है वो angle I से greater है. So what happens when light goes from denser to rarer medium? It bends away from the normal. Yes, very good. It bends away from the normal. In this case, yes, just let me write this. Angle R is greater than angle I. So it's very clear from the two pictures what happens when light goes from rarer to denser, bends towards the normal. Angle I is greater than angle R. Deviation is I minus R. When it goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal, and over here angle R is greater than angle I, and deviation is R minus I. I'll try to discuss more ray diagrams and try to make more videos for you all. Till then, keep watching and subscribing, and the link for the book will be given downwards in the playlist, which will be launching soon. Thank you.